Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue the classification of the bone. One term was left that was based upon the ossification. So first of all, I want to tell you about ossification. So what is ossification? Ossification is the replacement of the mesenchymatous and the cartilaginous tissue with the bony tissue. I have told you in the intrauterine period there is a first of all there is a bony model is formed. Model is formed by either by mesenchymatous tissue or cartilaginous tissue. This is a framework of the bones which formed in the intrauterine period. After that, this mesenchymatous or cartilaginous framework is replaced with bony tissue that is known as ossification. तो ऑसिफिकेशन जो होती है ये एक्चुअली जो मॉडल फॉर्म होता है पहले बोन की फॉर्मेशन के लिए वो एक फ्रेमवर्क है जो आइदर या तो कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा और वो कनेक्टिव टिश्यू आइदर तो मेसेनकाइम है या अगेन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज है. देन दिस फ्रेमवर्क इज कन्वर्टेड इनटू अ बोन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑसिफिकेशन. Ossification always starts at some specific and fixed point known as center of ossification. Some bones ossify with single center and other bones are ossified by many ossification center. So based upon ossification we will classify bone into two parts: bone having a single center of ossification or bones having many centers of ossification. नाम से अपीयर हो रहा है bones having a single center means bones will ossify by means of only one center. Center always known as this center always known as primary center. It will appear from 8th week of intrauterine period to the 10th year after birth. Mainly which bone ossify by single center? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? These are carpal bones, tarsal bones, ear ossicle, lacrimal bone and nasal bone and zygomatic bone. These are the examples of the bones having a single center of ossification. Bones having many center, अगर बोन ऑसिफाई हो रही है मल्टीपल सेंटर से तो मेनली उसके अंदर दो तरह के सेंटर अपीयर होते हैं. एक होता है प्राइमरी सेंटर एंड सेकेंडरी सेंटर. What is primary center? Primary center क्या है, कब अपीयर होता है? Primary center appear during the 5 to 15th week of intrauterine life. Typical primary centers किसके लिए होते हैं? For the shaft of the long and the miniature long bone. आपको पता है कि bones के पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट हैं. दो अगर हम long bone को देखें तो दो इसके ends होते हैं, upper end and lower end. In between the upper and lower end there is a shaft. This shaft is called as diaphysis. In between the two ends, upper end and lower end, अगर हम upper ends को नाम दें तो upper ends are known as epiphysis, upper and lower ends are known as epiphysis. In between the epiphysis there is diaphysis, and where there is the union between the epiphysis and diaphysis there is expanded and known as metaphysis, जहाँ से actual bone की growth हो रही होती है. तो हमने कहा कि बोन्स हैविंग मैनी सेंटर्स, अगर मैनी सेंटर से बोन ऑसिफाई हो रही है तो उसके अंदर मेनली टू टाइप के सेंटर्स अपीयर होंगे, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी सेंटर. प्राइमरी सेंटर्स कब अपीयर होंगे? दे विल अपीयर ड्यूरिंग द 5 to 15 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. और प्राइमरी सेंटर में से कुछ टिपिकल होते हैं. तो टिपिकल प्राइमरी सेंटर्स किसके लिए होते हैं? दे आर मेनली फॉर द शेफ्ट और द डायफिसिस. Atavistic primary center, two or more primary center give rise to the different parts of the bone which later fuse with each other. Skull की एक bone होती है जिसको कहते हैं tympanic bone, temporal bone. इस temporal bone के parts होते हैं. उसका एक part जो है वो squamous part होता है, एक part जो है वो tympanic होता है, petrous होता है, mastoid. All these are the parts of the temporal bone. फिर क्या होता है कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स थे ये डिफरेंट सेंटर से ऑसिफाई हुए, टू और मोर प्राइमरी सेंटर से.
फिर क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल टेम्पोरल बोन। इसी तरह स्फीनॉइड है और ऑक्सीपिटल बोन। So after the completion of the primary center, now we will move toward the secondary center. तो secondary centers क्या होते हैं? They appear in the bones having primary center. Always appear after the birth except for the lower end of the femur. This is known as epiphysis. They are irrespective to the size and the shape of the bone. There are different types of the secondary center. First of all, there is pressure epiphysis. अपने नाम से आपको बता रहा है कि ये कहाँ पे डेवलप होगा, ये वहाँ पे डेवलप होगा जहाँ पे प्रेशर होगा एडजेसेंट बोन्स का। एडजेसेंट बोन्स का प्रेशर आमतौर पे कहाँ होता है? एट द साइड ऑफ द जॉइंट। सो द प्रेशर एपिफिसिस will be present in all the ends of all the bone which are involved in the joint formation. So the types of the secondary center, first we have done, that is pressure epiphysis. Second one is traction epiphysis. The word traction shows that it is due to the pull of the, mainly due to the pull of the muscles. So the part of the bone which has developed due to the pull of the muscle, lesser and the greater tubercle of the humerus है, lesser and the greater trochanter of the femur. This is an example of the long bone. One end, upper end, another lower end. Upper and the lower ends are known as epiphysis. In between the epiphysis, this is the shaft of the long bone, and where that is known as diaphysis. Ends are known as epiphysis, shaft is known as diaphysis, and where the epiphysis meet with the diaphysis, there is a line which is known as metaphysis. मेटाफिसिस क्या चीज़ होती है? मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट है एक्चुअली। यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे बोन जो है वो ऑसिफाई होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट होती है, अदर ये कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट है, ये रिप्लेस होती जाती है बाय कार्टिलेज सेल, रिप्लेस होते जाते हैं विद बोन सेल के साथ। सो दिस इज नोन एज मेटाफिसिस। अपर एंड, लोअर एंड, एपिफिसिस, and where there is a union between the epiphysis and the diaphysis is known as metaphysis. Another type of the secondary center is atavistic epiphysis. Atavistic epiphysis mainly is classified on the evolutionary basis. It is separate bone in the animals, but in human, epiphysis for the medial end of the clavicle and epiphysis for the coracoid process of the scapula develop होता है due to the atavistic epiphysis. Aberrant epiphysis, aberrant epiphysis unusual होता है ये। Epiphysis of the head of the first metacarpal and bases of the other metacarpals are developed due to the aberrant epiphysis. Composite epiphysis, the word composite shows that the multiple secondary center of the some bone coalesces before joining the primary center is known as composite epiphysis. Upper end of the humerus and the femur are the example of the composite epiphysis, and the ribs and the vertebra are another example of the composite epiphysis. Composite atavistic center, in such cases the primary atavistic center and epiphyseal center fuse to form a single bone. Example क्या है इसकी? hip bone. So now we have done the classification of the bone. आपको इसके ऊपर एक SCQ आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था 5 नंबर का SCQ होता है, give the classification of the bone. और अगर 5 नंबर की नहीं देनी, 1 या 2 नंबर की कोई चीज़ आएगी तो उस पर आपको कह सकता है, किसी भी बेस पे क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकता है क्लासिफाई बोन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑसिफिकेशन. सो नो वी हैव डन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन. थैंक यू सो मच.